3 बजे की मेरी फ़्लाइट है Phuket. So I'll be there for 3 days. I'm going to roll there again. I have reached at 5 p.m. and I'll be heading out to Slumber Party Hostel for next 3 days. I'll be staying there and I'll be partying along with my new buddy. Guys, I'm now at the Bangla Road, which is in Phuket, and it's an amazing place. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने को है. I will show you a place called
केक के बारे में बहुत सुना था, खाऊंगा। बनाना कैरेमल राइट, सब बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। तो मैं घूम रहा हूँ बांग्ला रोड के आसपास। मुझे जाना है पीपी आइलैंड, और पीपी आइलैंड के आसपास एक्चुअली 4 और आइलैंड्स हैं, वो भी मुझे कल एक ही दिन में कवर करने हैं। परसों सुबह की फ़्लाइट है, तो मुझे शाम को हॉस्टल चेकआउट करना है। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं हैं, क्योंकि और 2 सिटीज़ में जाके धूम मचानी है। सो मैं सबसे सस्ता वाला पैकेज टूर ढूंढ रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, लेकिन दोपहर के टाइम में तो सब सस्ते पैकेज टूर्स बता रहे थे। अब शाम जैसे ही होते ही सब रेट्स डबल हो चुके हैं, तो मैं ढूंढ रहा हूँ सस्ता वाला पैकेज टूर पीपी आइलैंड। जैसे ही मिलता है मैं कल सुबह चले जाऊँगा पीपी आइलैंड। 2 दिन लगातार पार्टी करने के बाद में बहुत लेट हो चुका है और मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा फुकेत में, तो मैं एक बाइक हायर करूँगा और आसपास के बीचेस पे घूम के आऊँगा। लेट्स गो। Amazing coconut juice. So right now I'm in Old Phuket town, और काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्धा टेम्पल, वहाँ से मैं वापस जाऊँगा मेरे हॉस्टल पे, एंड उसके बाद शाम को मैं जा रहा हूँ पटांग।
man, traveling all the way from Paris on bicycle to Phuket. Tell me something about you. Sorry? Tell me something about you. How was your journey? Tour with bicycle is really incredible. And since how many days you have been traveling on bicycle? What? Since how many days you have been traveling? How many months you have been traveling? 8 months and 10,000 kilometers. Oh my goodness, that's a record. I wish you all the best for your next journey. And where are you heading now? We go to Kuala Lumpur in Malaysia. Oh my goodness, amazing. In my tent, I have everything. My And- tent, my kitchen, And your clothes? my clothes, and different spare. Amazing, amazing. And where do you keep your passport and money? Passport and money. My passport and money? Yeah. It's a secret. Oh. Right guys, so I am in old Phuket town. यहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग मेरी लगभग हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ बिग बुद्धा टेम्पल। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर है। वहाँ से मैं वापस जाऊँगा शाम को हॉस्टल। गाइस तो अब मैं आ चुका हूँ फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मेरी फ़्लाइट है बैक टू बैंकॉक एंड वहाँ से फिर पटाया। वापस से पेट की हालत ख़राब हो चुकी है, ऐसा बोलने में क्या जाता है। राइट गाइस, अब मैं पहुँच चुका हूँ पटाया। दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। बहुत टायरिंग जर्नी थी फ्रॉम फुकेट टू पटाया बिकॉज आई हैड टू चेंज मल्टीपल फ्लाइट्स। ऑलमोस्ट 4 दिन बाद मैं राइस देख रहा हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के पगला गया था। बट येस, आई एम एंजॉयिंग फूड राइट नाउ विद स्क्विड फिश अलॉन्ग विद राइस। इसके बाद मैं यहाँ से मैं जाऊँगा पटाया बीच। उसके बाद आगे का कोई प्लान नहीं है, देखते हैं क्या होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।